those who are comfortable, they can open their cameras. So first of all, I would like to welcome all the research scholars to this platform of pre-PhD coursework being organized by UGC Malviya Mission Teachers Training Center under the coordinatorship of our senior faculty member from this university campus, Dr. Kaveri Lad ma'am. Indeed, I hope that all of you are enjoying this course. You are taking something in your bags. First thing is that, first of all, that pre-PhD coursework, when we talk about coursework for this PhD degree program, it is usually for the people, those who are going to start the research. And now you see that maximum of us have already enrolled. We have passed 2 to 3 years of our PhD program. But still, we can take some benefits from this pre-PhD coursework. And we are very fortunate that this coursework has been undertaken by us through our home comfort, and it is online mode where we are in our comfort. So I hope that all of you will take something from this coursework. And even though if you are near to complete your PhD coursework, but I hope that the resources which are arranged by the course coordinator, the experts arranged by the course coordinator, you should take something from them. Because when we talk about the National Education Policy 2020, friends, you can see that there are number of changes being there in the higher education system. Thus, just now when you have enrolled for this pre-PhD program, in that time being, one circular was issued by the University Grants Commission that now the net will be a mandatory part for pursuing a PhD program. So we can take that we are very fortunate that just passing a entrance test conducted by the university, now we are enrolled for this PhD program. You see, friends, that whenever we talk about the research, whenever we talk about the higher education system, the research being conducted by the higher education, be it in form of a project, be it in a form of a research paper, be it in a form of a book, be it in a form of a patent, be it in a form of a PhD degree. These are many types of research being done in the higher education system. These research should contribute to the society. That is one of the basic objective of the research. Because you see that as a higher education system, we are having sufficient number of time for doing the research. And when we are, that is also the one of the major objective of the national education policy, that now the funding for the research, even for the funding of the research, uh, it will be a peer reviewed, and National Research Foundation will be established in the near future, where through a single platform, the funding will be given to the best research through a peer review process. So our research should contribute to the society. That is the major objective of doing the research in the higher education system. Because the people, they look at the higher education system with lot of hopes that they will contribute to the society. And when you are doing the research, you should think globally, but work locally.
The standard of the research should match the global standard. But you should see that you are solving the problem of the local needs. That should be your major objective. No repetitive topic should be there, even though the current trends topic can be taken, but majority of us as a researcher should see that how we are contributing to the society by solving the problem of the society. You see that there are number of untouched problems of the society lying in your local areas where you have to do the research in future. You see, friends, that as a higher education system, you are having time, you are having funding, but we are not doing the research to find out the local problems. Giving the example, two example, what I have been searching as a research guide of this university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. What I am searching for is that for two topics, I was searching for the students. One was the water management of Chhatrapati Sambhajinagar city. And second topic was the traffic management of Jalna Road. From past 7 to 8 years, I have offered this topic to many scholars, but they have denied. And after giving them this topic, they never come to me for approaching for guideship. So this should be the view, this should be the perception of ourself, where we should see that we are solving the local problems. And you see that when we are talking about the National Education Policy 2020, there will be number of changes in the higher education system. And why the government has come up with this National Education Policy 2020? It is the third policy after the independence. First policy was launched in the year 1986, second one in 1992, and this is the third policy in 2020 we have launched. Can anyone tell me what is the basic objective of this National Education Policy? Anyone has read this policy document? So the national educational policy is aiming at giving the skill-based education to the students, sir. Yes, Skill you're right. enhancement and skill-based education. Yes, you're right. The students will have the liberty to pick a course of their choice. Yes, you are right. As again, the main objective of the national education policy is skilled based and multidisciplinary education. As we are aiming for 5 trillion economy, this can be achieved through the skill based education, multidisciplinary education. You see, friends, that as on now, we are having one of the youngest, largest population of the globe. अंडर 40 के जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है. We are going to provide the skilled labor to the entire globe in the near future. So the role of higher education here becomes very important. Quoting the same example where we will provide the skilled manpower to the entire globe, you see that many European agencies, they are providing the funds to our university for upgrading the higher education system because they know that these manpower will come up to serve their countries. So they want that these manpower should be trained very good, well in advance. So even for Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, we are having one project called Merge, where the European Union has provided us more than 50 lakh rupees
for training the teachers, for training the students, for faculty exchange program, for research projects. So even the world knows that the India will dominate the labor market in near future. So that's why this national education policy is there, aiming 5 trillion economy, where we as a superpower, world superpower, we can become through the skill-based education, multidisciplinary education. And you see that when it comes to the research, doing the research, we are doing very good. When it comes to the social science research, we are top in Asia and we are seventh in the world. After 2015 and 16, the rank of India in conducting the social science research has improved a lot, where we have jumped on the first place at in Asia, and we are seventh around the globe. When it comes to the number of publication being done by the Indian scientists, again, we are top in Asia and we are fourth in the world, where the number of scientific publication has also increased. Filing of the patent has been doubled, tripled in the COVID period, where the Indian Patent Office have received a jump of 200% in filing the patent by the Indian scientist. So it is a very good sign where we can see that in the Indian government is also providing sufficient number of funds to the social scientists through the agency called as Indian Council for Social Science and Research, ICSSR. I'm also one of the beneficiary of that particular funding agency where I have got 6 lakh rupees for conducting a major research project. So the numbers are increasing of research papers, filing patent, producing PhDs also. We top when it comes to producing the PhD scholars. You can see that even as a student of this university, uh, I, uh, where I have seen that way back from past 20 years before, when we can see that only one or two Viva used to be conducted in the entire week in the university. Now, in this university, we can see on daily basis, n number of Vivas are there. Number of research center has also increased. Number of research guide has been increased. When I was pursuing my PhD, I have, as per my knowledge, what I have observed, that there were only 5 to 10 guides in commerce and management. Now there are more than 200 research guides. So it is a good sign where our country is going uh, very fast or conducting the research very fast. But we have to see that there should be some output of that particular research. That research should contribute to the society. That research should contribute for the betterment of the society. That is a big question mark where we are lagging. Even we have increased the number of research papers, but how much citations we have increased of those research papers? It is a question mark in front of us. We have increased number of patents, but how much royalties we are earning through those patents? Again, that is a question mark. You see that in our day-to-day life, what we are using, many things where a part of research of a graduation where the scholars they have met and they have prepared n number of things जो हमारे डे टू डे नीड की चीजें हैं, डेली नीड की जो चीजें हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रेजुएशन के पार्ट थे, जो इंजीनियर्स ने साइंटिस्ट ने वो इन्वेंट किया है, दे हैव पेटेंटेड इट एंड दे हैव गॉट sufficient number of royalty also for that particular things. So the research should not be merely for getting a degree, PhD degree, or just securing a job or getting yourself a tag of a doctor, but it should contribute to the society. That is one of the major issues. I still remember
uh, my first PhD student, he has done his he has done his research on Maharashtra State Road MSRTC, Maharashtra State Road Transport Corporation, and when the thesis was lying on my table. Two police officers, they came to my office for some work of them, and they inquired about what that particular book is. So I told them that this is a PhD thesis where a student has done a research on a particular topic. मैं उन्होंने बताया कि एसटी महामंडल में उन्होंने रिसर्च किया है मेरे एक स्टूडेंट ने, और ये उसका एक कॉपी है. तो वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने वो हाथ में लेकर देखा और उन्होंने एक सवाल किया मुझसे कि सर ये जो थीसिस है इसका समाज को क्या फायदा है, या इस थीसिस के जो रिकमेंडेशंस है आपने गवर्नमेंट तक के पहुंचाए हैं, या इस थीसिस के जो रिकमेंडेशन है वो डेपो मैनेजर के पास में आपने पहुंचाए हैं, ये थीसिस के जो रिकमेंडेशन है आपने महामंडल के एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किए हैं. तो ये क्वेश्चन मार्क आया था जब मेरा पहला ही स्टूडेंट था. And by the grace of God, that those both people from non-academic field, they came to me and they told me and they have taught me that whatever PhD you are producing, they should contribute something to the society. So now, as you are the students of this PhD degree, you should see that how your research will be useful. Don't go for numbers. Don't go for numbers when it comes to paper publication, attending the conference, or getting your degree in a hurry. You should go for the quality. As in our childhood days, we used to hear a story of a rabbit and tortoise. जो कछुआ और खरगोश की जो हम कहानी हमेशा सुनते थे, वो आज के दिन में सही है वो कहानी. That slow and steady will always win the race. आप स्लो के लिए जाओ, क्वालिटी के लिए जाओ, naturally your work will be recognized. Your work will be recognized at the top level. Even though you will be late, your friends will be moving to their aim a little early than you, but still your work will have some recognition. Your work will have the quality. You will get the fruits, or you will get the benefits of that particular thing if you will go slowly and steadily. So this is just a general overview of my lecture, that what I was to share with you. So today I'm having two lectures of mine. The first lecture, I will deliver a talk on e-resources, and the second lecture, I will deliver a talk on in the afternoon. I will deliver a talk on corporate social responsibility. So can anyone tell me my screen is visible? Yes, it is visible. Yes, sir, it's visible. It is not a full slide, I think so. It is a full screen slide. Can anyone tell? Yes, sir, full screen visible. Full screen visible. Okay. So use of e-resources in research. It is one of the important thing where nowadays the electronic gadgets, access to the internet, access to the e-library, access to the e-content have increased. So how we can benefit from those e-resources? Because you see, friends, that when we take the research from here 10 to 15 years back, or more than that, in the early 90s,
what we have heard from our seniors or from the senior faculty member from this university campus कि एक जर्नल उन्हें अगर सब्सक्राइब करना रहता था, फॉरेन जर्नल सब्सक्राइब करना रहता था, तो वहां पर 6 महीने लग जाते थे, साल भर लग जाता था वो जर्नल को सब्सक्रिप्शन करने के लिए। या हम बात करें कि कोलैबोरेटिव रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो इट वाज हार्डली इम्पॉसिबल व्हेन देयर वाज नो era ऑफ द इंटरनेट। सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, द वर्ल्ड हैज बिकम अ global village and access to internet now. Recently Japan has launched the 8G network, and currently all of us, we are using 5G unlimited internet access is there to all the researcher. And this is the best example of the e-resources, the online meeting we are conducting. अगर यही बात हम कोविड के पहले अगर करते थे कि हमको ऑनलाइन मीटिंग लेनी है, हमें यूट्यूब के लेक्चर्स लेने हैं, या हमें गूगल फॉर्म भरना है, सो नोबडी वाज हैविंग द अवेयरनेस ऑफ दोज थिंग्स इन द पास्ट, बट नाउ द थिंग्स हैज चेंज आफ्टर कोविड। जो कोविड ने हमें 3 साल में सिखाया है, वो हमें सीखने के लिए अगर कोविड ना होता तो हमें 10 साल और लग जाते। 2030 आने आने तक के हम ये सब चीजें सीखते थे, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स, देन योर access from WhatsApp group. So these things have been taught us in the COVID period, and now जो चीज हमें 10 साल में सीखने की थी वो हमने आज 2 साल 3 साल में हम लोग परफेक्ट हो गए। And now this is the thing. In one of the lecture delivered by one of the vice chancellors from Delhi in last week, where they have conducted a survey and they have concluded that till the year 2040, 2040 आते आते 95% जो क्लासेस रहेंगी वो ऑनलाइन रहने वाली, no offline classes will be there. So you see that how much the things will go online. So internet, as it's one of the most used component, www has turned into the biggest source of information with the widest coverage and fastest access. It is the most powerful tool for global communication, exchange of information. The amount of publicly available information on web is increasing consistently at unbelievable rate. Example is of Shodh Ganga, Shodh Gangotri. What we have seen in the past 5 to 10 years, that now thousands of theses have been uploaded on these portal, government portal, where you can do the review of your research. So the data is increasing day by day when it comes to the internet. And you see that how it has revolutionized the people access information, has opened up new possibilities in areas such as digital libraries, information, dissemination, retrieval education, commerce, entertainment, government, and healthcare. Taking the example of the traditional library and digital library, again, what many of the librarians, they have told us that the walk-in students in library has decreased to 50%. यानी कि जो एक वीक में 100 लोग आते थे वो आज कहीं ना कहीं सिर्फ 50 पर आ गए। Why? Students are not studying, but students are studying, but the information is easily accessible to them through the digital libraries. Students are now having the access of the digital libraries. And also many things like commerce, you can take the example of UPI. आज से हम 7-8 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि एक बनाना सेलर जो है या एक मैंगो सेलर जो है, इवन ही विल हैव हिज ओन बारकोड। ये हमने कभी सोचा नहीं था, जो आज हमारी गवर्नमेंट ने पॉसिबल किया है कि कॉमर्स पूरा बदल चुका है। इंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आज।
ट्रेडिशनल थिएटर्स में तो लोग जा रहे हैं, बट नाउ थिएटर इज मोर लाइक अ मॉल। जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है वो बंद हो चुके हैं, या वो बंद होने की कगार पर है। आज मल्टीप्लेक्सेस के अंदर एक मॉल ट्रेंड आया हुआ है जहां पर एंटरटेनमेंट होता है आपका। वैसे ही एजुकेशन तो पूरा आने वाले दिनों में भी चेंज होने वाला है। देन गवर्नमेंट और हेल्थ केयर भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। देन the internet can be a great place to accomplish research on many topics, but finding quality web material and using them to your advantage in your writing can be a challenging thing, because n number of raw data is available online, but which data is useful to you, how you can actually match your research or your search, it is a difficult task that we have to learn. And you see that it is because putting documents or pages on the web is easy, cheap, or free, unregulated, unmonitored. It is self-publishing medium, that is, anyone can publish anything. That means that not everything one finds on the web is equally valuable or reliable. There is a famous saying in that on the internet, nobody knows that you are a dog. हम आज जो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी जो हम न्यूज़ देखते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीजें हम इंटरनेट के ऊपर, कोई वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं, दीज आर द अनरेगुलेटेड थिंग्स. Even you can have your own website, you can publish your own papers on those websites. Nobody will regulate them. So finding the exact data, source of the data here becomes more important. And also you see that unlike most print sources, web sources do not have professionally accepted and edited to be published. जैसे कि आज जो हमारे जो इंडेक्स जो आए हैं, गवर्नमेंट ने जो कंपलसरी किया है, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में, इवन यू सी दैट मेनी क्लोन्ड जर्नल्स आर देयर. Even a person, a teaching professional person, those having a 15 to 20 years of experience in teaching, gets cheated by these cloned websites of the Scopus index journals. So finding out the right journal is also one of the difficult thing when it comes to the publications. Then therein lies the rationale for evaluating careful whatever one finds of the word. The burden is on the reader to establish the validity, authorship, timeless, and integrity on what he finds. You see, friends, as I have told you in my starting of my lecture, that India now ranks third in global scientific publication. You see that India's position globally in scientific publication has improved from the 7th position in 2010 to 3rd position in 2020. We have jumped from 7th to 3rd position in the 10-year span, that is from 2010 to 2020. Also, that scholarly output have increased from 60,000 papers in 2010 to 150,000 papers in 2020. It has now tripled. Sir, India also ranked थर्ड ग्लोबली इन नंबर ऑफ पीएचडी प्रोड्यूस्ड एनुअली. जैसे कि मैंने मेरा एग्जांपल आपको बताया कि जब हम देखते थे हफ्ते में 1 या 2 वाइवा होते थे यूनिवर्सिटी में, आज से 20 साल 25 साल पहले, बट नाउ डेज दिन में 2 से 5 वाइवा होते. इतने सारे स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, इतने सारे रिसर्च सेंटर्स बढ़ चुके हैं. एंड यू सी दैट इन सिमिलर अपवर्ड ट्रेंड द नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस टू द इंडियन साइंटिस्ट हैज नाउ डबल्ड इन द लास्ट 4 ईयर. ये तो अभी सिर्फ कोविड के बाद का डेटा है कि जहां पर हमारे पेटेंट ऑफिस में डबल का फिगर हो चुका है. यानी कि आज मेरे खुद के 3 पेटेंट कोविड के बाद. सो हम क्या करते हैं कि हमारा कलीग जो करा हमें वो करना है, ये उसमें भी काफी सारा बढ़ चुका है. लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारे,
पब्लिकेशंस में नंबर बढ़ रहे हैं, पेटेंट्स में नंबर्स बढ़ रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं, बट उसका आउटपुट क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आज भी है. Now the government has permitted the foreign universities to open their campus in our country. नवंबर 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक सर्कुलर लाया जहां पर उन्होंने ये बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है दे कैन ओपन देयर व्हाट यू विल से देयर कैंपस, ऑफलाइन कैंपस इन आवर कंट्री. तो ये कंपटीशन होने वाला है आपको और हम. आज आप देखो कि मैक्सिमम जो हमारे इनरोलमेंट है पीएचडी के लिए, मैक्सिमम एनरोलमेंट इज इन द स्टेट यूनिवर्सिटी. स्टेट यूनिवर्सिटी में ही सबसे ज्यादा पीएचडी के एडमिशंस, और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज को कंपटीशन होने वाला है आने वाले दिनों में, जहां पर उन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कॉम्पीट करना है. बट दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस, वेयर वी विल लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम. ऐसा नहीं कि आज हमारे पास में अच्छी चीजें नहीं है, बट उनके पास की जो अच्छी चीज है, उनके इवैल्यूएशन पैटर्न, असेसमेंट, असाइनमेंट्स, ये हमें भी सीखना पड़ेगा अगर हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर रहना. सो दिस थिंग्स विल बी देयर एंड यू सी दैट सीएसआर, इसके ऊपर तो मैं एक पूरा पूरा लेक्चर ही लेने वाला हूं आपका आफ्टरनून में. But because of CSR, the Global Innovation Index 2022 released by the World Intellectual Property Organization saw India's innovation ranking improve from 81st in 2014 to 40th. यानी कि 80 से हम 40वें रैंक पर आ गए हैं 2022 में, 8 साल के पीरियड. So again, that is one of the good things which have been improved because of the corporate social responsibility, CSR. Sir, next page screen is not visible, sir. Okay. Share the screen, sir. Now, No, sir. No, sir. First. is because of the slow internet connectivity. Just a minute. Now it is visible. Yes, sir. Slide is third in global scientific publication publication. Okay. Visible. Thanks for your concern. Just I will unmute someone. Now you see that CSR, जिसके ऊपर मैं एक फुल फ्लैश लेक्चर लेने वाला हूं, उसके तहत आप देखिए कि जो हमारा रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2022, इसमें हम 40th रैंक में हम आ चुके हैं, जो 2014 में 81st हमारा रहा. बिकॉज नाउ डेज बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर स्पेंडिंग, स्टार्टअप्स भी हमारे काफी सारे बढ़ चुके हैं. इवन इन दिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वी हैव बजाज इंक्यूबेशन सेंटर which is funded by in CSR, and also we have entrepreneurship development cell being funded by Aurangabad Electricals. So you see that many state universities are now having the funds of CSR available with them. I can quote one example of one of the colleges of Mumbai. Just like here, I was delivering a talk on an online platform. एक 2 साल पुरानी बात है, सागर यूनिवर्सिटी में जब मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था, तो मुंबई के एक प्रिंसिपल थे वो पार्टिसिपेंट, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने 8 करोड़ रुपीस एक्वायर किए हैं CSR फंड्स.
और काफी सारे अच्छे लैब्स उन्होंने डेवलप किए हैं उनके कॉलेजेस में. सो बिकॉज ऑफ CSR ऑल्सो आर व्हाट यू विल से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैव इम्प्रूव्ड. साइंटिफिक पब्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं, हम लोग तीसरे पायदान पे है, बट ऑब्वियस जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो चाइना और यूएस का बड़ा ही. हम वैसे भी थर्ड पोजीशन पर आते हैं जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं. तो जब हम नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस की भी जब हम बात करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग तीसरे पायदान पर है. जहां पर आप देखिए, मैंने पहले की स्लाइड्स में भी बताया कि हम लोगों के आज 1,50,000 पेपर्स एनुअली पब्लिश्ड होते हैं, जो वर्ल्ड के टोटल पब्लिकेशन का 5.31% था 2018 के अंदर. सो these things are improved, but when we talk about the citations to them, it is not available. Then need of electronic resources. Why e-resource? You see that electronic resources have a great potential but and bright future to attract the users. It combines all the benefits of multimedia, digital coding, and internet. It enables the users to carry everywhere and can read on all types of computing, including the handheld device. Now you see that जो हम लोग MB में थे, यानी कि फ्लॉपी ड्राइव पे हम जब थे कि 200 MB, मैं भी फ्लॉपी यूज कर चुका हूं, कि 200 MB या 300 MB की एक फ्लॉपी आती थी. आज हम जो SDD पर हम लोग आ चुके हैं, जहां पर 2 TB का भी अवेलेबिलिटी आज एक कॉमन पर्सन के पास में है. 2 TB के हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल है, 2 TB के पेन ड्राइव्स अवेलेबल है. इवन on our mobile phones, on our computers, sufficient number of space is there for saving the digital contents. HTML formats, you see that HTML is the hypertext markup language used for most web pages. Ebooks using HTML can be read using a standard browser like Microsoft Internet Explorer. Then now we are having Google Chrome, Mozilla Firefox, with no need of special equipment. And these files can be in the ASC2 format or in a Unicode format. PDF, again, as I have told you that after the COVID period, this have become very important. एक कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर आता है, एक कोई नोटिफिकेशन आता है, एक कोई कोर्स वर्क के बारे में कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी का आता है, immediately that is being circulated within a seconds to thousands of people in a PDF form. So what is PDF? It is published as .pdf, a file format created by Adobe system, initially to provide a standard form for storing and editing printed publishable documents. Because documents in PDF format can easily be seen and printed by the user on variety of computers and platform types. They are very common on World Wide Web. Even for the funds problem, like if you are having a Marathi document, if you are having an Urdu document or any other language document, it can be accessed properly through a PDF format. In PDF format, no changes is there in the PDF format. It is one of the type of the log document. जो आपके जो फॉर्मेट्स है वो बिल्कुल पीडीएफ में चेंज नहीं होते हैं और इजीली एक्सेसिबल है. नाउ स्मॉल किड इज आल्सो यूजिंग दिस पीडीएफ. Then you see that PDF files designed for printing on standard paper size are hard to view on screens with limited size or resolution. PDF files typically contains product manuals, brochures, magazines, articles, or flyers, as they can embed uh, uh, fonts, images, and other documents. Then we have a PDF file contains one or more pages, images, each of which can zoom in or zoom out. Then Adobe PDF files are optimized for the web
by rendering text before graphics, image, and hypertext links. Then we have tagged imaged file format. Then TIFF is a file format for storing images, including photographs and a line art. TIFF format is widely supported by image manipulation application, by publishing and page layout application, by scanning, faxing, word processing, optical charge recognition, and other application. Then we have CHM format. It is also known as Microsoft Compressed HTML. You see that CHM format is a proprietary format of based HTML. Multiple pages and embodied graphics are distributed along with proprietary metadata such as single compromised file. Then PostScript format. You see that PostScript is a page description language used primarily in the electronic and desktop publishing areas for describing the content of printed page in a higher level. Then we have desktop author format, that is .dnl. You see that desktop author is an electronic publication suites that allow certain of digital webbooks with virtual turning pages. देखोगे ना आपने कि virtual turn होते हैं pages, that is in .dnl. You see that digital web resources of any publication type written in format include brochures, e-books, digital photo album, e-cards, digital diaries, online resumes, quizzes, exams, test, forms and surveys. ये एक बहुत कॉमन चीज है जो आज यूज हो रही है. एक नेचुरल जैसे वो किताब का उसमें आवाज भी आता है पेज टर्न करने का, दैट इज इन द .dnl. Then rich text format. You see that rich text format is a document file format developed by Microsoft in 1987 for cross platform document. Most word processors are able to read and write RTF documents. Then we have the e-resources. इसके अंदर हमें e-books है, e-journals है, e-zine है, e-thesis and dissertation है, e-newspapers है, e-reference books है, CDs available है हमारे पास में, database available है. These are the number of e-resources which you can use in your research work, right from e-books to the database, which is available online through free of cost. No excess charges there. जैसा कि हम बताए कि शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, कई सारे ऑनलाइन ई बुक्स अवेलेबल है. कई वेबसाइट ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक प्रोवाइड करती है. आज जो नया एक ट्रेंड दूसरा आया है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI, यानी कि आज जो रिसर्च पेपर हम पब्लिश करते हैं उसे DOI नंबर भी, जैसे पहले ISSN आया था, उसके बाद में इम्पैक्ट फैक्टर का ट्रेंड आया था, अभी DOI का ट्रेंड आया है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, where with a number your research can be identified online, and now it is becoming mandatory. So even it is my request to all of you that whenever you are publishing any book chapter or you are publishing any research paper, it should have a DOI number. Even the NAC accreditation agency, even many universities, they are asking for the DOI number of the research paper. That you should keep in your mind. E-book तो सभी को पता है, it is very common. E-book is a portable hardware and software book as a portable hardware and software system that can be displayed large quantity of readable textual information to the user. An e-book is a commonly blended by a publisher for distribution. Many e-journals and e-books are available online, which you can access for your research. E-journals, you see that an e-journal is processed, published, and distributed all over the world by electronic network. E-journal started with the full text database offered by Dialogue way back in the year 1980, linking citation and references to bibliographic database or full text article make it utility more. यानी कि आपका जो ऑफलाइन जो पब्लिकेशन है आज,
जो प्रिंटेड फॉर्म में जो पब्लिकेशन, इसे वर्ल्ड लेवल पर एक्सेस नहीं मिलता। यानी कि जो ओपन सोर्सेस जर्नल जो होते हैं, ओपन सोर्सेस के जो जर्नल रहते हैं, वो जर्नल जो है ऑथर से पैसा लेते हैं पेपर पब्लिकेशन के लिए। उसका रीजन ये है कि जब ऑथर पेपर पब्लिकेशन के लिए पैसा देता है और वो ओपन एक्सेस होता है, ऑथर का जो रिसर्च रहता है वो वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं सबको दिखकर आता है, उसका रेफरेंसेस लिया जाता है, उसके साइटेशंस इंप्रूव होते हैं। लेकिन यही अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में कितना भी अच्छा आप पब्लिकेशन करो, बट इसका एक्सेस बहुत लिमिटेड रहे। यानी कि आपका जो प्रिंटेड जर्नल जो है वो कितने लाइब्रेरीज में उसका सब्सक्रिप्शन लिया गया है, बस उन्हीं लाइब्रेरीज के रिसर्च स्कॉलर्स, उन्हीं लाइब्रेरीज के टीचर्स ही उन जर्नल्स को एक्सेस कर पाए। लेकिन अगर आपका जर्नल ऑनलाइन अवेलेबल, देन दे कैन बी एक्सेस इन द इंटायर ग्लोब। जैसे कि हम बताते हैं कि कोलैबोरेटिव रिसर्च, आज हमारा कंट्री कहां पर लैग कर रहा है कि हमारे पास में कोलैबोरेटिव रिसर्च की काफी कमी है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशंस काफी कम है। हमारी यूनिवर्सिटी में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोफेसर्स, बट मेनी प्रोफेसर्स दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद साउथ कोरियन universities. One of the professor has developed a lithium battery that can be chargeable till 5 years, 5 साल तक की वो बैटरी चार्ज रहती है। और एक जो हमारे प्रोफेसर है, उन्होंने एक ऐसा इंक जो है इन्वेंट किया है, जो वॉशेबल इंक है, यानी कि पेपर फट जाता है लेकिन वो इंक मिटता नहीं है पानी से। सो दीज कोलैबोरेशंस कैन बी डन विद द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। और हमने ये नहीं सोचना है कि हम कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के भी कुछ लोग हैं, कि हमने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ साइंस का ही फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकता है। इवन फॉर कॉमर्स यू कैन हैव फॉरेन कोलैबोरेशन। मॉल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, आपके जो डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी जो एआई इनेबल्ड मार्केटिंग है, आपके जो 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 मॉड्यूल्स है, वो जो फॉरेक्स के मॉड्यूल्स हैं, या एनएससी बीएससी के जो ट्रेंड्स होते हैं, निफ्टी सेंसेक्स के जो ट्रेंड्स होते हैं, इसका स्टडी भी जो है कोलैबोरेटिव रिसर्च में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So there are n number of topics which are available in which you can do the research at the foreign level. So e-journal here plays a major role where the uh, your research will get a world recognition. जैसे कि मैंने अभी एक एडिटेड बुक निकाला था, मैंने खुद ने एक अभी एडिटेड बुक निकाला था जनवरी के महीने में। सो आई हैव एडवर्टाइज दैट एडिटेड बुक or the content of the edited book online. So where I have got by sitting in Chhatrapati Sambhajinagar, I have got 8 research book chapters from foreign countries. So online जब आपका रहेगा तो आपके जो एक्सेस जो है, आपके जो रिसर्च का जो एक्सेस है वो काफी बढ़ जाएंगे। तो इसमें ई जर्नल का बहुत एक मेजर रोल है, जैसे कि आप स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, और दूसरे जो इंडेक्स है। एंड देन वी हैव ईजाइन। ईजाइन मींस इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, इट इज आल्सो कॉल्ड वेबजाइन। द आर्टिकल्स दैट आर स्टोर्ड of file server may be distributed or accessed via computer network. Some of the example of eZine are India Today, Music India. Then we have e-thesis and dissertations. When we used to pursue our PhD, हमें लाइब्रेरी के कैटलॉग में पूरा ढूंढते रहना पड़ता था। लाइब्रेरी के कैटलॉग ढूंढने के बाद में हमें फिर जाकर मैन्युअली वो थीसिस सर्च करना पड़ता। But nowadays, you can just put few keywords on शोध गंगा, शोध गंगोत्री। शोध गंगा पे आप आपके रिसर्च के कीवर्ड्स डालिए, पूरे इंडिया में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने रिसर्च हुए हैं, with fraction of seconds you can get, you can see the objectives, you can see the hypothesis framed, how hypotheses are tested, how the survey is conducted through the questionnaires. Now the things are becoming very easy to the researchers. They can access these theses from Shodh Ganga. They can see that how the previous studies
objectives of previous studies were there, and how the hypotheses were framed, and how these data were collected with which questionnaires. So number of things can be done with these database of e-thesis, e-dissertations. Then electronic newspaper is also available, यानी कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने तो पहले तो भी वो रात में 12 बजे के बाद में अपडेट करते थे न्यूज़पेपर अपने, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड अपडेटिंग इट आफ्टर 7 o'clock, कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते थे, तो ऑफलाइन न्यूज़पेपर्स का डिमांड कम होने की वजह से नाउ ऑल्सो पेड electronic newspapers, many popular Marathi newspapers like Dainik Bhaskar. Dainik Bhaskar is available free, of course, but Divya Marathi you have to access, Sakad you have to access by paying some amount as a fees to them. Then e-references book, there are also n number of references available online for the e-references book. CD-ROM तो बहुत अभी outdated हो गया है, but now the CD-ROM has taken over by the pen drives and the hard disk. As I have told you that 2 TB के भी जो hard drives है वो available है आज. Then analytical database are primarily statistics read-only database which store archived historical data used for analysis. Web pages are generated dynamically. Search parameters, इसके अंदर भी statistical websites available है where analytical data is available to you. You can go through, even on the Facebook, now you see that many pages have been developed which are totally dedicated for the surveys which you want to conduct. So analytical database is also very much useful in your research. Then operational database allows to modify the data. These types of database are usually used to track real time information. Now this is the information age where we are collecting the information in the pocket in form of mobiles, where the mobile phones, we are taking the information in our pocket with real-time information is available. If I am telling you that today the Nifty has this points, you can, all of you, you can track it immediately on your mobile. If I tell you that this circular has been given by the University Grants Commission, latest circular, immediately you can go to the UGC website and see the real-time data. So as a researcher, as a scientist, as a PhD scholars, now real-time information can be cracked through the operational data. Electronic conferences, what we are doing right now, ये हम जो कर रहे हैं, it is one of the type of a ई मीटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस. और इसका हिस्ट्री आप देखिए कि 1994 में पहली टाइम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड इन नवंबर 1994 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक computational chemistry conference was held, that is ECCI was held. And you see that electronic conferences were variably known as electronic forum, electronic user group, listeners, discussion groups are important resource for the researchers. As I have told you that now you can collaborate, now you can exchange the ideas through the e-journals and the e-conferences. So post-COVID, number of e-conference have increased. Now, even many conferences are held in hybrid mode. और इवन हमारे पास में अभी जो मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो ये करते हैं कि हाइब्रिड मोड में भी हम आने वाले दिनों में, करंट ईयर में हम लोग अवेलेबल करेंगे हमारा ट्रेनिंग सेंटर, वेयर इवन अ फॉरेन पर्सन कैन sit at his place and he can address the students, those who are physically present in the classroom. We are planning like that in this Malviya Mission Teachers Training Center कि उसे एक कैमरे के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल वर्चुअल क्लासरूम हम लोग प्रिपेयर करेंगे जहां पर स्टूडेंट्स बैठेंगे हमारे क्लासरूम में, और हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास में एक माइक और एक कंप्यूटर का स्क्रीन रहने वाला है, और एक बड़े स्क्रीन पर जो है तो रिसोर्स पर्सन देखेगा, और रिसोर्स पर्सन को ऐसा व्यू आएगा वो जहां पर बैठेगा कि उसके सामने सब लोग बैठे, और जो भी माइक पर बोलेगा वो
हाईलाइट होगा या स्पॉटलाइट होगा. So these things will improve. AI will improve. Even you see that in future also, through the help of artificial intelligence, the doctors will conduct the operations. Virtual operations will be a reality in near future. You see that what are the features of e-resources? Text can be searched except when represented in form of images. अगर आप टेक्स्ट देखो कि आप लाखों का डेटाबेस आपके पास में है और उसके अंदर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का कोई डेटा चाहिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन सर्च दैट. So that is one of the best qualities of the e-resource. Then hundred or thousands may be carried together on one device. Approximately अभी तो इतना बढ़ चुका है कि सीडी रोम पेन ड्राइव के अलावा आप देखिए कि आप आपके पेन ड्राइव में 500 से 1000 बुक्स भी आप ले सकते हो. अगर आप एवरेज अगर पकड़ते हैं कि एक बुक अगर 1 GB का भी अगर है, 1 GB यानी कि मैक्सिमम बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट है, बहुत सारे इमेजेस है, तो ऐसे आप तकरीबन 2000 किताबें भी जो है आज की डेट में एक पेन ड्राइव में लेकर जा सकते हो. देन ई रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड विद स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोएस्ट कॉस्ट. ये आज मान लो कि आप जो 70 लोग इस मीटिंग में हो, अगर मान लो कि मुझे पीपीटी आपको अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर करना है, इट विल कॉस्ट मी अराउंड व्हाट यू विल से एवरेज 1500 रुपीज. 3500 प्रिंट होंगे इसके, जो मुझे 1500 रुपए आपको लगेंगे. और वही अगर ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको शेयर करूंगा सबके मोबाइल फोन्स पे, नो कॉस्ट इज देयर. लो कॉस्ट, नो, आई विल से नो कॉस्ट इज देयर. देन डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंटली, यानी कि 1 सेकंड में ही आप सबको मिल जाएंगे और उसका डैमेज और वैंडलिज्म नहीं होता है. जैसा कि हमारी लाइब्रेरीज का भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमने रखना है, तो उसका जो मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है फिजिकल लाइब्रेरीज का, इसमें ई रिसोर्सेस में नहीं होता है. नो financial constraints. You see that infrastructure required displaying, storing, or print electronic resources are expensive. Then downloading and printing can be a costly affair. Social constraint is there. यानी कि आज भी हम देखते हैं कि सोशल और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, आज भी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रूरल एरियाज में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है उतने अच्छे से. जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले लाइट ही चला गया, आप सबको प्रॉब्लम हुआ पेपर 2 के लिए. तो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होता है, सोशल कंस्ट्रेंट होता है, जहां पर जो है आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है. तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, अगर हम टोटल ई रिसोर्सेस पर अगर हम डिपेंड रहे तो. देन यू सी दैट दिस thing, use of e-resources in teaching and research. You see Google सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो है आज हमारे पास में, वो है गूगल. इवन हमें आईपीएल का स्कोर देखना रहता है, हम उसे गूगल कर लेते हैं. इवन हमें कोई मूवी का रेटिंग पता करना रहता है, हम गूगल कर लेते हैं. तो वैसे ही रिसर्च के लिए भी गूगल काफी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए कि आप कैसे सर्च करते हो गूगल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गूगल बुक्स अलग होते हैं, गूगल स्कॉलर अलग है, और गूगल पेटेंट सर्च अलग है. गूगल बुक्स में अगर आप सर्च करेंगे तो पूरे ई बुक्स आपको अवेलेबल होंगे वो पर्टिकुलर. गूगल स्कॉलर में आपको पूरे रिसर्च पेपर्स और उनके साइटेशंस आपके पता चलेंगे. गूगल पेटेंट में आपको पूरे पेटेंट पता चलेंगे. Then we have some e-resources in public domain at a glance at ebooks. Number of ebooks are available. That is Project Gutenberg. It is having more than 20,000 ebooks. Then we have Authornama. In this website also number of ebooks are available.
then bratbilly.com, onlinebookpage.com, MIT Open Courseware. It is one of the popular courseware where 500 course material are available free of cost. ऑनलाइन बुक पेज, डिजिटल लाइब्रेरी open.edu, इसके अंदर 25,000 ई बुक्स अवेलेबल है. देन रीड प्रिंट, it is very useful for historians and love of literature, as this sites contain mainly the classic. It offers thousands of free books for students, teachers and their classic enthusiasts. Then free books, इसके अंदर भी काफी सारे books available हैं. Then e-journals, then directory of open access journal, DOAG, इसके अंदर लगभग जो है आज 5 से 10,000 जर्नल्स हैं और लगभग 4 से 5 लाख आर्टिकल्स हैं. देन न्यू जर्नल, फ्री फुल टेक्स्ट ओपन गेट जर्नल्स, इसके ऊपर आप जाके जो आपके काम के जो जर्नल्स हैं उन्हें आप सर्च कर सकते हो. देन पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, बायोलाइन इंटरनेशनल, बायोमेड सेंट्रल, हाई वायर प्रेस, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, then Journal of Digital Information, free medical journals, Strengen, गेटवेज भी आज अवेलेबल है आपको, पिंकेजेस है, कॉक प्रिंट्स है, बबल इंफॉर्मेशन सर्विस है, ई प्रिंट है, इन्फोमाइन है, इम्यूनिटी है, देन वॉइस ऑफ शटल है, सोशल साइट है, डायरेक्ट सर्च है, ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट है, खोज अवेलेबल, इसके अंदर लिटरेचर हिंदी संस्कृत के आपके डोमेन्स में आप सर्च कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि शोध गंगा है, देन वी हैव विद्या निधि, डिजिटल लाइब्रेरी स्कॉलरशिप पोर्टल, देन ई ज्ञान घोष, इग्नो का एक डेटाबेस अवेलेबल है आपको, देन शसक्स एक पोर्टल है यूजीसी का जिसके अंदर काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल है. देन एनएसडीएल का वेबसाइट है हमारे पास में. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इवैल्यूएट द ई रिसोर्सेज विच आर available with you. Then need of evaluation, authenticity of the information published on the web need to be established. Then the author of published information may or may not be the author or expert in that area. कि मान लो अगर मैं केमिस्ट्री का पेपर अगर पब्लिश कर लेता हूँ ऑनलाइन, nobody knows that I am from commerce. All will tell that he is having more than 20 years of experience. He is working in UGC Malviya Mission Teachers Training Center, so he must be an expert in chemistry. But ऐसा नहीं होता है. You should serve that कि author का जो स्पेशलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है उसका हो. देन इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट में बी आउटडेटेड. आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास में 1042 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है पूरे भारत देश में, और ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है एशिया के वेबसाइट पे, AISHE है. तो जरूरी नहीं है कि वो 1042 हो सकता है उसके अंदर 60-70 विद्यापीठ और बढ़ चुके, या उसके अंदर से 40 विद्यापीठ कम भी हो चुके हो. सो रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें हमेशा मिलेंगी, ये जरूरी. देन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क में नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, देन इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रेजेंटेड फॉर अ गिवन ऑडियंस. अभी आप सभी को तो पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018 व्हिच इज अमेंडेड इन 2022 इज देयर. इसके अंदर एक स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म बता रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट ई रिसोर्स का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए उसमें. हमने प्लेगरिज्म में भी हमने नहीं आना चाहिए. व्हाट इज प्लेगरिज्म? टेक्स्ट प्लेगरिज्म, इमेज प्लेगरिज्म, वीडियो प्लेगरिज्म, audio plagiarism. Also, we can say that self-plagiarism is also there. And what is plagiarism? An act of presenting another person's work or an idea for your own purpose. So, you should write in your own words. Even if you are taking some references, you should acknowledge that particular original author on that particular thing. अवेयरनेस प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटीज को लेकर आना है प्लेगरिज्म से रिलेटेड. देन उसके कुछ रूल्स है, लेवल्स है.
अगर देखिए आपकी आपकी जो सिमिलैरिटी है 10% है, no penalty is there, but you have to revise. It should be less than 10%. If similarity is from 10 to 40, उसे लेवल 1 की पेनाल्टी में गिना जाएगा. सिमिलैरिटी इज 40 to 60 लेवल 2, और लेवल 3 में 60 एंड अबव. उसके अंदर डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल भी आएगा. देन वी विल हैव इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी भी रहेगा. पेनल्टी आप देखिए कि लेवल 0 पर नो पेनल्टी है. लेवल 1 में स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट द रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन द स्पेकुलेटेड टाइम, नॉट मोर देन 6 months. देन लेवल 2 में स्टूडेंट विल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. और लेवल 3 में students registration for the program will be cancelled. So you should see that these things should not be there. Use online tool to check plagiarism. Provide link you have referred to. Write in your own words. Don't copy. If any questions are there, we can take it up, because again, I'm having a lecture in your class only. So if you are having any questions or queries, you can ask, because immediately at 2 o'clock with the new topic, I have to join again. Any questions or queries? No, sir. Thank you so much. It was really a wonderful session, and we got very much clarity on how to do this searching and e-commercing, everything. Alhamdulillah. Thank you so much for your wonderful session, please. Thank you, Siddiqui, for your appreciation. Again, we will join at 2 o'clock for the next session. The next topic will be covered by me is corporate social responsibility and higher education in India. Thank you. Okay, sir. Thank you so much, sir. Please. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello, ma'am. Attendance. Ma'am, can we are log it?
Hello.
सर का आवाज नहीं आ रहा है?